So in the last class we have solved the numerical, है ना, and we found the code. आप सभी लोग कॉपी पेन लेके रहेंगे क्योंकि एक न्यूमेरिकल आज आपको भी लगाना है, ठीक है। सो हम लोगों के पास एक मैसेज है जो कल हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। वो न्यूमेरिकल था कि हमारे पास मैसेज था S1, S2, S3, S4 and S5, right? Sorry. S0, S1, S2, S3, S4. And we have solved the code for this message. The code was S0 was 0, 0, 1. Anybody can tell me what was the code? So we have solved this code, right? I hope everything is visible to everyone. S0 was having the code 001, S1 is having code 11, S2 is 000, S3 01, and S4 10. And the probabilities of these messages were, so I can write down the probabilities here, comma, PS0 was 0.15 and PS1 was, it is 0.2, PS2 was 0.15, then PS3 was 0.25, then PS4 was 0.25. Right? This we have already solved in the last class. Today we have to solve two more things. One is the average length of code, right? Because we have solved the code, right? And we have given certain number of bits to every message. So now we want to find out what is the average length of this code, right? And then we will also find the entropy of the source. And we want to see that how much efficient this code is. Means the average length of code should approach towards the entropy of the system. As we have discussed in the last class, what is the objective of source coding? That the number of bits which we are providing to the message, those average number of bits should move towards the entropy of the source. Because entropy is the calculation which is telling us the optimum number of bits which should be used for the purpose of coding, right? So it can be the ideal thing for us. Entropy is the ideal thing for us, and we should approach towards entropy to make our code more and more efficient, right? So first we will try to calculate the average length of code for this Huffman coding, and then we will calculate the entropy, and then we'll calculate what is the efficiency of this code, right? So first part we are going to calculate is now calculate the average length of code, right? So to calculate the average length of the code, we can use the formula that length can be denoted as L, or you can say it is L average. It can be summation of Pi Li, where I is going from 1 to 5, or I is equal to 0 to 4, right? It will be more okay with us because we are using 0 for first message. So you can go from I is equal to 0 to 4. So P naught, L naught. So P naught means PS naught. It is P naught, right? So P naught is probability and L is the length of this code, right? So for example, this is L naught. L naught is what? It is 3. मैंने कल बोला था ना, what is the length of the code? Number of bits is the length of the code. So if you find out, first one was P naught, L naught, then you can have P1, L1 dash dash, you can have P4, L4, right? So to calculate P naught is given to you, PS naught is equal to 0.15. So 0.15 multiplied by the L naught. L naught is the length of S naught message. So length of S naught message is 3 bits. So multiplied by plus P1
is 0.2. So 0.2 multiplied by the length of the code is 2 bits. So multiplied by 2 plus then P3 L3. So P3 is 0.15 and L3 is 3. So 0.15 into 3 plus then P4 L4. So P4 is P0, P1, P2, then P3. P3 is 0.25 multiplied by 2. Right? Plus last one 0.25 multiplied by 2. Everyone will solve it and tell me what is the average length. जरा मुझे फटाफट बताओ एवरेज लेंथ क्या है? Solve it. It will be 0.45 plus 0.4 plus 0.45 plus 0.5 plus 0.3. कितना है बेटा? Sir, 2.3. 2.3. Very good. It is 2.3. It is 2.3. Very good. So this is the average length of the code of Huffman code which we have designed, right? So this was the average length of Huffman code, 2.3 bits. Now what we have to calculate? We have to calculate the entropy of this source, entropy of this system after doing this Huffman coding. So वो निकालने के बाद हम देखेंगे इन दोनों में difference कितना है, right? So how we can calculate the entropy? I'm drawing a line here, right? Okay. Now here we can calculate the entropy. So entropy can be denoted as H of S, which can be summation of Pi log 1 upon Pi. This was the formula for entropy, है ना? Yes, sir. Pi log 1 upon Pi. Now you know the Pi. This is P0, P1, P2, P3, P4. So we know all the probabilities. So what you can do now? You can solve it. For example, first one is 0.15 log of 1 upon 0.15 plus. Second one is 0.2 log of 1 upon 0.2. Third one is 0.15 log of 1 upon 0.15. Fourth one is 0.25 log of 1 upon 0.25. And the last one is 0.25 log of 1 upon 0.25. Now tell me what is the answer. I have written down all the values of probability. Now you have to solve them. You have to solve the value of this log of 1 upon 0.15. You will have a scientific calculator with you. आप उसे solve करिए and tell me the answer. क्या आंसर निकल के आया यहाँ पे? Entropy is 2.28 bits and we are getting the average length is 2.3 bits, right? So what is the formula for code efficiency? You can write it down. We can find out the code efficiency. Code efficiency means the efficiency of this Huffman coding, right? We can represent it by eta and it can be H of S upon L average. H of S upon L average. So now what is the value of H of S? It is 2.28 divided by 2.3, right? Can anybody tell me what's the answer? 2.28 divided by 2.3. Zero point 991. 0.991, right? 0.991 or 99.1%. So this is the efficiency of this Huffman coding
that it approaches the average length of bits towards entropy up to the extent of 99.1% for this particular problem, right? So we can say that this Huffman coding is very efficient in nature, and it can approach with the help of this Huffman coding. We can use the number of bits which is very near to the entropy of the source. So you can say that this Huffman code can be considered as the optimum code, right? It can be considered as the optimum code. So if whenever you will get a problem in Huffman coding, you have to solve these three things. First, you have to design the code. Then you have to calculate the average length of the code. Then the entropy of the source. And last one was the code efficiency, that how much this code is efficient, right? So now I have already told that we also solve a numerical which will be basically solved by you people, right? So I'm going to write down that numerical. So थोड़ा सा fast करेंगे, मैं इसको आज खत्म करना चाहता हूँ, ठीक है? So I'm already setting all these messages in decreasing order. Otherwise, you know, the first step is that first you have to rearrange the messages in the decreasing order, right? But for the simplicity, I'm directly writing PS0, PS1, PS2, PS3, PS4, and all these messages are in decreasing order. So S0 is 0. The message is S0 having probability 0.30. Then there is a message S1 having probability 0.25. Then there is a message PS2 having probability 0.15. Then message S3 having probability 0.12. Then S4 having probability 0.08. And the last we are having the message is S5 having probability S5 is equal to 0.10. Right? जीरो पॉइंट 10 छोटा है कि 0.08 छोटा है? S4 छोटा है। 0.08 छोटा है ना? यस सर। 0.10 बड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको उल्टा कर देता हूँ ताकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए। और तो बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट, राइट? तो 0.10 0.0 ऐसे कर लो इसको। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। अब क्या अगला स्टेप क्या करना है? अगला स्टेप क्या करना है बेटा? मिनिमम तो सम करना है लिस्ट वालों को, या लिस्ट वालों को जोड़ना है, और जोड़ो और फिर आगे लेके जाओ। अगला स्टेप फटाफट बना के कोई प्रोबेबिलिटी की टेबल बता दो बस, कोई एक बच्चा। इसमें देखेंगे हम कि हर बार टॉप पे पहुंचाता था, कोई जरूरी नहीं टॉप पे पहुंचे, मैंने बताया था ना। हम ये जो टेबल बनेगी फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगी, तो सबसे हाईएस्ट वाली प्रोबेबिलिटी पर आएगी, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर देखना ये कहां जाके सेट होता है। तो कौन बताएगा मुझे? थर्ड नंबर पे होगा ये तो जाकर। तो मुझे पूरी टेबल बताओ क्या है? 0.
30, हाँ दूसरा 0.25, हाँ 0.18, 0.18 यानी कि ये गया यहाँ। थर्ड फिर 0.15, 0.12, नेक्स्ट इज अगेन वी हैव टू ऐड दीस टू प्रोबेबिलिटीज। सो फटाफट इनको ऐड करो। अभी कहाँ जाएंगे मुझे बताओ। 0.30, 0.30, 0.27, 0.27 ये यहाँ चला 0.25, 0.18. गया 0. Again we will do the same step. We will add these two probabilities. अब ये कहाँ जाएंगे? सर टॉप पे 0.43, 0.43, 0.43, 0.30, yes, 0.27, again 0.57, 0.57 and 0.43. दिख रहा है? यस नहीं सर उधर हो गया। 0.57 तो दिख रहा है। यस Now we have to give them codes. यस सर। शुरुआत से यहीं से शुरू करते हैं ना। इसको 0 दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं, फिर इसको 0 दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं। यहाँ लिखिए 0 1 0 1। आप देख लीजिएगा, आप दूसरा पेन भी यूज कर सकते हो, ब्लैक पेन या ऐसा कुछ, है ना। यहाँ पर 0 लिख दो, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर। अब कोड देना शुरू करो और मुझे यहाँ बताओ मैं क्या कोड्स लिखूं। सीधा आप लोग बताएंगे, मैं कोड्स लिखूंगा। यहाँ बैक ट्रैक करना है, बताया था कल। ऐसे ब्रांच नीचे जाएगी तो 0.30 को क्या कोड मिल जाएगा? 0 0, वेरी 0 0 ये मिल गया। और इसको क्या मिल जाएगा? 0 1। ठीक है, 0.43 को तो 1 ही मिल जाएगा यहाँ पर आके। ठीक है, अब फिर से बैक ट्रैक करें यहाँ से तो 0.25 को क्या कोड मिलेगा? 1 0, वेरी गुड। और 0.18 को 1 1, 0.27 को कोड मिला हुआ है 0 1, यहाँ से देखो निकाल दिया मैंने। और 0.30 को कोड मिला हुआ है 0 0, ये यहाँ। राइट, अगेन विल बैक ट्रैक फ्रॉम 0.27 से पीछे जाएंगे, 0.27 से पीछे जाएंगे तो ये क्या 0 1 लेके चल रहे हैं, 0 1 0, और यहाँ 0 1 1। 0.25 को कोड मिला हुआ है 1 0 और 0.30 को कोड मिला हुआ है 0। ठीक है, अगेन विल गो बैक टू 0.182, यहाँ पे आएंगे। सो इस ब्रांच से नीचे आएंगे तो 0 1 0 कोड मिला हुआ है, सॉरी 0.182 क्या कोड मिला हुआ है 1 1 1 1, इसको 1 1 मिला। सो 1 1 से नीचे आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 1 0 और ये क्या बन जाएगा 1 1 1 1। क्या यही आ गया सबके कोड? यस सर यही आएगा। बेटा चैट बॉक्स में सभी लिखेंगे इसको। ये समझ में आ गया है? ओके, सो नाउ व्हाट इज द कोड फॉर 0.30 मैसेज? ये वाला कोड क्या है बताओ जरा। 0 0 0 0 0, नीचे वाला S1 का क्या है? 0 1 1 0, 1 0 1 1, 0.15 का 1 1। S3 का क्या है? 1 2 0 1 1, वेरी गुड। और S4 का क्या है? 1 1 0 and 1 1 1। क्या सभी के यही कोड्स आ गए? आप वेरीफाई कर लीजिए।
एक बार सभी वेरीफाई कर लो बेटा, सभी के यही कोड्स आए। प्रशांत कह रहे हैं S2 का 010 आएगा। सर ये S2 का जो है ना 010 आ रहा है। 010 आएगा, कोई बात नहीं। या अब ठीक है, अब सही है सर। तो अब आपको पता है कि क्या करना है। अब मुझे क्या निकालना है, एवरेज कोड लेंथ, राइट। सो निकालिए फटाफट, एवरेज कोड length. Formula is L average is equal to summation of PI LI. Very good, very good. Exact answer is 2.45. Very good. Now the next part that we have to calculate the entropy of the source. So entropy of the source is summation of PI log 1 upon PI। कितना आएगा मुझे आप बताएंगे निकाल के बिट्स। सभी लोग देख लें क्या यहीं तक पहुंच गए। 2.42, हार्दिक ने बिल्कुल सही निकाला, 2.42 बिट्स। So next step is what? That you have to calculate the code efficiency eta, right? So eta is equal to HS upon L average. So Ayush Srivastava is saying 98.7%. Very good. So if it is 98.7%, क्या यही है 98.7 सभी का? देख लो एक बार, वेरीफाई कर लो। यस सर 98.7। So 98.7 is again a very good percentage, है ना। हम लोग 98.7, 98, 99 तक पहुंच रहे हैं एंट्रोपी तक, तो ये बहुत अच्छा कोड है। So we can say that Huffman coding is a very good और ऑप्टिमम कोड। सही है। शॉर्टेस्ट आपको नंबर ऑफ बिट्स ये दे रहा है जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और एंट्रोपी के बहुत नजदीक रहेंगे आप अपने सोर्स के। एक छोटी सी चीज मुझे और बतानी है जो थोड़ा सा इससे आगे एडवांस लेवल पर भी कभी कभी बात की जाती है। आपके लेवल पर तो ये बाइनरी तक ही रहेगा, आपको 2 के ही पेयर करने पड़ेंगे। बट अगर सभी ने कर लिया हो तो एक लाइन और आगे बोलूं, क्या ये हो गया है सभी का कंप्लीट? यस सर। ग्रेट, okay. After this binary clubbing, there can be a possibility of M-Array-Huffman code also, right? There is a possibility of M-Array-Huffman code, right? And what we will do in M-Array-Huffman code, we club the last M messages, right? We club last M messages, or we club the probability of last M messages, right? So you can write it down. What we will do in M-Array-Huffman code, you can write it down. We can repeat. Write down. We can repeat. I'm not running this numerical. So in M-Array-Huffman code, what we can do? We can repeat the same process for last M messages, right? For last M messages, right? For example, in the same problem, if I say it is a 4 array code, right? Undoubtedly these codes are
binary codes, right? 2 array codes where the value of m is equal to 2. So it is binary coding, right? But if you say that, for example, we are having m is equal to 4, so it can be 4 array code, right? If we are having 4 array code, then what we can do here? We should club the last 4 messages, right? So here we can club last 4 messages. So see, what we have to remember when we are clubbing the last 4 messages. Should I run these all things? Okay. For example, this is a mathematical for us, and we have to do 4 array coding, right? So in this case, 4 array coding is not possible with these kind of messages. We know that whenever you want to do m array coding, your message should be like this. Means it is not like that for any message you can do any label coding, right? Means if your message can be represented in just 2 bits, 0 and 1. Then there is no need to have 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 4 possible combinations. If your message require these 4 combinations, then only we will go for these 4 array codes. Or if your message needs 8 levels to encode, then only we will go to 8 array codes, right? For example, in this message, we are having only 5 symbols, 1, 2, 3, 4, 5, 6. If we club these 4, right? So if we club these 4, then this will become a single message. And then we will having only 2 rest probabilities. This is conceptually wrong. We know that in binary communication, in the last table, there should be 2 messages. So in the last table, there should be 4 messages. There should be 4 messages, right? So for if still we want to do 4 array coding for this, then what the arrangement we can do? We can assume a message as 6. We can assume a message as 6, which is having the probability 0.00, right? It doesn't give any effect on your communication because the probability is 0. So exactly this practically, this is not existing. This is just a mathematical manipulation, right? So what you can do? You can assume a message number 6, which is having probability 0.00. Now you can club these 4 messages. You can club these 4 messages and you can form a next table. Right? For example, if you are clubbing these four messages, what will be the next table? Can anybody tell me? 0.12, 0.10, 0.30. 0.30 आएगा क्या? बोलो बेटा. 0.30. 0.30 आएगा. So 0.30 आप चाहे तो टॉप पर रख लें और चाहे तो टॉप से नीचे रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So मैं इसको टॉप पर रख लेता हूँ 0.30. The rest 3 messages are 0.30, 0.25, 0.15. Right? Now this coding will get end only in 2 steps. Right? We have not to go to 3rd step. Why? Because here we got these 4 messages, and we know that the algorithm gets end whenever it reaches up to the m messages. M means this m level, m array. So if you are doing binary communication, the value of m is equal to 2. So these iteration will take place up to 2 messages. Here these iteration will take place up to 4 messages because this is 4 array code. This is 4 array of man code. Now again, the simple process is what? That you have to give them coding. So now what is the coding? 0, 1, 2, 3. These 4 numbers you can provide to them. In binary code, you can give 0, 1. In 4 array code, you can give 0, 1, 2, 3. Right? And again, for these all 4 codes, what you can write? 0, 1, 2, 3. Right? So 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Now the step same. What you have to do to write down the code, you have to backtrack, right? So if you backtrack from this 0, 0, you will get the code 0, 0 for 0, 1, 2, 0, 1 for 0, 1.10, 0, 2 for 0.08, and 0, 3 for 0.00. Right? Now you can write down the codes here for 4 array of man code. You can write down the code here. For 0.30, for example, the code is 1. Right? For 0.25, the code is 2.
For 0.15 the code is 3. Now for this is 00, this is 01, 02, 03. These are the codes which you can give to these messages whenever you do 4-array coding, right? I hope you got this concept. Still, you can increase this level from 4 to 8 or any. If you have a long stream of messages, then you can use 8-array code, 16-array code, Huffman coding. किसी भी लेवल की Huffman coding आप यूज कर सकते हो. मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल हो जाएगा, बट स्टिल इसमें कुछ भी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है. आप देखो आराम से कोड कर लिया मैंने. अब मैं एवरेज लेंथ निकालना चाहता हूँ. सी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आप 1 2 3 लिख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ बिट्स कितनी है. सो नंबर ऑफ बिट इज 1, नंबर ऑफ बिट इज 1, नंबर ऑफ बिट इज 1, नंबर ऑफ बिट इज 2 2 2 2. दैट्स इट. सो विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला PILI, right, you can calculate the average length. So PILI means 1 multiplied by 0.30, 1 because 2 is a 1 bit, right? 1 multiplied by 0.25, 1 multiplied by 0.15, 2 multiplied by 0.12, 2 multiplied by 0.10, 2 multiplied by 0.08 and 2 multiplied by 0.00. तो इसका 0.00 का कोई इफेक्ट आएगा नहीं, right? So you can calculate the average length. Similarly, you can calculate the entropy, right? So and code efficiency, everything you can calculate. So you got the concept or not? You can write it in chat box. ये समझ में आ गया आप लोगों को? बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है, कहीं कुछ भी नहीं है. So ऐसा करते हैं, इसको हम लोग होम असाइनमेंट भी रख सकते हैं. We have to calculate the average length for this code, right? And then entropy for this code, 4-array code, right? And then the code efficiency. ये आप मुझे ग्रुप में शेयर करोगे तीनों पॉइंट्स निकाल के. आप सिंपल आंसर भी शेयर कर सकते हो या फिर बहुत अच्छा रहेगा एक छोटे से पेज पे ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करके शेयर कर देंगे आप. ठीक है, ओके बेटा, आज ये रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगा. थैंक यू सर. ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.